Before we start, I would like to introduce the management team that we have here today. Here we have Mr. Professor Shashikant Suryanarayan, he is a managing director. Mr. Amit Dikshit is a joint managing director, and Mr. Rajesh Sheth is a chief financial officer. SEDEMAC has evolved from a niche control system startup into one of India's most influential auto ancillaries, powering the backbone of mobility and industrial energy. Its control intensive ECUs today sit at the heart of two wheelers, three wheelers, electric vehicles, and generators all over the world, enabling smarter, cleaner, and more efficient performance. With over 7.5 million ISG and EFI controllers shipped to date, and more than 120,000 genset controllers supplied annually, SEDMAC has become an industry-defining technology partner to world's leading OEMs from TVS Motor, Hero, Bajaj in mobility to Kirloskar, Mahindra Powerol, and Generac in the generator ecosystem. SEDMAC's rise mirrored the transformation of India's mobility landscape from carburetor to EFI, from mechanical starter to integrated starter generators, and now from ICE to electric, as India becomes the fastest evolving two and three wheeler market globally. Backed by strong engineering depth with 135 plus engineers from IITs, NITs, BITS, and DSIR approved R&D center, SEDMAC has developing high margin, high complexity products that are extremely difficult to replicate. ESG, integrated ECUs, and next gen EV MCUs that OEMs depend on for reliability and compliance. Financially, the company has demonstrated scale with quality. Revenue of rupees 6,583 million in FY25 with robust profitability, EBITDA margin 19%, and strong return ROCE 34%. Specs about the IPO. The total issue size is 1,088 crore at the upper end of the price band. This is 100% OFS. Price band of the issue is rupees 1,287 to 1,352 per equity share. Bid lot is 11 equity shares and multiple thereof. Anchor books open on Monday, 2nd March 2026. Issue opens for the public on Wednesday, 4th March 2026 and close on Friday, 6th March 2026. With this, now I request the manager. Only significant competitor to us in ISG, and we are sensorless, whereas there is a censored ISG. You will understand what this means if you see the video a little bit before we play it. It's useful to recognize that most of the competitor names. So हर एक electronic control unit has this sort of a structure, and उसको हमने एक open करके आपको दिखाया है. तो ये electronic control units करते क्या हैं? They are the brains of various systems in the equipment that they go into. Came out of my lab in IIT Bombay. मैं वहाँ प्रोफेसर रह चुका हूँ. 2004 से मैं वहाँ प्रोफेसर हूँ. और ये 2007-8 के आसपास ये कंपनी came out of the lab, and we were 3 students at that point in time and me who created this company, and now of course it is grown very well. Arjun ने नहीं बताया, just to let you know for everybody's understanding, the 9-month financials are already there in the RHP. So the numbers are 770 crore in revenue in the 9 months, 161 crore in EBITDA in the 9 months, and a PAT of 71.5 crore in the 9 months with ROC not annualized about 32%. Okay, तो ये background के साथ I will give you a little bit of an idea. नाम है शशिकांत सूर्यनारायणन. मैं इस कंपनी सेडेमैक मैकेट्रॉनिक्स लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ. एंड ये कंपनी जन्मी थी मेरे लेबोरेटरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में, जहाँ मैं प्रोफेसर हूँ 2004 से. ये कंपनी का स्थापन हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें लगा कि हमें कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ खुद से बनानी चाहिए जिसका वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हो, माने काफ़ी सारे लोग यूज़
यूज़ करें वो सब टेक्नोलॉजीज़। वो सोच अभी भी बदली नहीं है, और हमने काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज खड़ा किया है जो मिलियंस ऑफ व्हीकल्स, जनरेटर्स वगैरह में यूज़ हो रहे हैं। अभी कंपनी अभी 9 मंथ FY26 में 770 करोड़ का रेवेन्यू किया है 9 मंथ्स में, जिसमें 161 करोड़ का EBITDA और 71.5 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी किया है। और आगे जाके इस कंपनी के काफ़ी सारे ग्रोथ प्लान्स हैं अलग अलग मार्केट्स में, नॉट जस्ट टू व्हीलर और जनरेटर जिसमें ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स बेचती है, बट ऑल्सो इन अदर मार्केट्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड पावर टूल्स एक्सेट्रा। फाइनली कंपनी बेचती क्या है? ये बेचती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स, जो ये इक्विपमेंट वगैरह के ब्रेन्स होते हैं। माने वो इक्विपमेंट को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए, उसका एमिशंस ठीक रहे, उसका ड्राइवेबिलिटी ठीक रहे, ये सब तय करने के लिए ब्रेन्स लगती हैं। वो ब्रेन्स ये मैन्युफैक्चर करती है लार्ज वॉल्यूम में, और बड़े बड़े OEMs जो टू व्हीलर में हो या जनरेटर में हो एक्सेट्रा उनको सप्लाई करती है। TVS मोटर, बजाज ऑटो, किर्लोस्कर, महिंद्रा, जेनरैक एक्सेट्रा। तो ये हमारी कंपनी है, एंड ये पूरा का पूरा OFS इशू है। कंपनी को अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो प्राइमरी कैपिटल इक्विटी मार्केट से नहीं ले रही है, और जो भी इशू साइज़ बना रहे हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उनके पार्ट शेयर्स ऑफलोड कर रहे हैं। इशू साइज़ 1087 करोड़ है। So you have Gujarat customers? नहीं, हमारे कस्टमर्स आर OEM कस्टमर्स, माने TVS मोटर हो, बजाज ऑटो हो एक्सेट्रा, तो वो रिटेल कस्टमर्स नहीं है, माने हम इंडिविजुअल्स को बेचते हैं। Okay. एंड हमारी कंपनी के पास अभी 10 और 12 सिग्निफिकेंट कस्टमर्स हैं, एंड 4 बिग कस्टमर्स इन टू व्हीलर। वो सब गुजरात बेस्ड तो नहीं है ओरिजिनली, बट उनके गुजरात प्लांट्स तो हैं। So what are your expectations from Gujarat? एक्सपेक्टेशन इज़ दैट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी मुझे लगती है बहुत सालों से मैच्योर इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है, तो उनको रिस्क टेकिंग आता है। फर्दर उनको सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेसेस भी है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ लॉन्ग हिस्ट्री। तो ये नेचुरल है कि अगर शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑफर किया जाए तो इस इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी तो इसे तो एंगेज तो करना ही है। फिर आपकी डिसीजन है आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं, पर एंगेज तो डेफिनेटली हमें करना ही है। Okay, sir.